Hello, good evening. So, my name is Mahimna Acharya, and we are at Careerline right now. What we are going to learn today? आज कौन सा दिन है? Reading का. Yes, good. Reading day, right? So, not Wednesday, reading day. What we are going to do today is understand little bit about reading first. Right? But before we get into that, थोड़ा देखते हैं what is PTE? क्या full form पता है PTE का? The full form of PTE is Pearson Test of English. Right? कितना घंटा चलेगी एग्जाम? How long is the exam? 2 hours minimum, right? 2 hours 15 minutes तक usually होती है, and it can go until 2 hours 30 minutes also, depending on the number of questions that you might have. Right? Now, this is how your exam would look like. Yeah, this is where we practice. This speaking and writing is part 1, reading is part 2, and listening is part 3. Right? Now, average हर एक का will be half an hour, and it's not fixed. कोई section could be 25 minutes, कुछ section could be 30 minutes, right? But average it will be half an hour for each, maximum up to 2 hours में आपकी test खत्म हो जाए, 2.5 maximum, right? Now, so as today is reading day, we will see how in different ways we can solve reading, because this is such a question जहाँ पे I'm sure बहुत problems होती होंगी. How many are you able to make correct? कितनी सही होती है? Out of 5 blanks, let's say example 2 या 3, right? Okay, so there is also a major problem कि भाई बहुत problems होती हैं when we don't know the meaning, we don't know कौन सा grammar will apply होगा, right? So that is what we are going to learn today. Because reading में total, let us see, we will do the other questions later on, right? Let us start with reading first today. Total there are 5 question types in reading, right? From what you can see here, fill in the blanks, drop down, MCQ multiple answers, reorder paragraph, MCQ single answer, and fill in the blanks, drag and drop. Right? You have practiced ये दो question practice किए होंगे blanks at home, है ना? Right. So out of these 5 questions, I believe majority जो जिसका weightage ज़्यादा है are these 2 blanks. Right? अगर एक दो भी wrong हो गई तो ज़्यादा marks कटेंगे. MCQ वगैरह अगर wrong भी हुई, because it's kind of tough और थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा. So rather than wasting your time in the MCQ or reorder, we would focus on blanks, because tough भी है, गड़बड़ भी होंगी ज्यादा, and if you do it correctly तो scoring भी ज्यादा होगा, right? So what we're learning today is both the types of blanks, fill in the blanks drop down and fill in the blanks drag and drop. Are we together? चालू करें? Right. Let us start with fill in the blanks, drop down. Let us start with the first one, sleepwalking. Okay. Now, can you tell me कि usually कोई भी ये, let's say कि हम ये blank solve कर रहे हैं, in what ways can we solve blanks? बताओ. क्या-क्या चीजें जरूरी हैं to solve a blank? So good. There are 3 ways in which we can solve blanks. One is, पहले तो पूरी blank का understanding होना चाहिए, right? If you don't have this understanding, तो it will be difficult for you to solve each and every blank. दूसरा है कि यहाँ पे जो भी words आएंगे, उन words के meaning पता होने चाहिए. So there's one, understanding the meaning and the entire blank is one way. दूसरा, like you correctly said, grammar. कि कौन सा grammar rule apply होगा यहाँ पे, active है, passive है, and ing forms, word forms वगैरह वगैरह, that we will see. And the third one is the collocations. ये 3 तरीके हैं in which we can solve कोई भी blank आसानी से, right? Let us start with this one. Are you able to see वहां से? Right. Sleepwalking is a disorder that occurs during sleep, in which person may get up and walk around. It usually happens at dash times of the night, especially during the deeper stages of sleep. तो हमने स्टार्टिंग से यहाँ से चालू किया पढ़ने का, and we read, सिर्फ यहाँ तक नहीं, पूरा सेंटेंस हमें खत्म करना है पढ़ने के टाइम पे, right? Once you've read this, फिर क्या करना है कि blank के आगे पीछे का we have to read again. It usually happens at dash times of the night. At what times of the night? Certain times of the night, random times of the night, specific times of the night, exact times of the night. I will not answer. You are going to first tell me कि मैं कौन सा choose करूं. Last में discuss करेंगे. पहले मुझे देखना है कि how much are you able to think.
फिर गड़बड़ क्या होते हैं, दैट वी विल डिस्कस एट द एंड, कि तुम्हारा जो आंसर था रॉन्ग क्यों था एंड व्हाई इज दिस द करेक्ट वन। बाकी आपका दिमाग नहीं, सिर्फ मेरा दिमाग चलेगा। आई रिपीट, इट यूजुअली हैपेंस एट सर्ट, अगर पता नहीं चले तो हर एक वर्ड बीच बीच में ऐड करके यू कैन स्पीक, बोलना ही है, नॉट इन माइंड। It usually happens at certain times of the night. It usually happens at random times of the night. It usually happens at specific times of the night, and it usually happens at exact times of the night. कौन सा से सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है? श्योर लॉक किया जाए? Okay. It usually happens at certain times of the night, especially during the deeper stages of sleep. Okay, let us go for that. Certain. People who sleepwalk are not aware of their actions and often do not remember dash they have done when they wake up. Okay, and often do not remember dash they have done when they wake up. Do not remember what they have done, where they have done, when they have done, how they have done. They do not remember what. Pakka? Okay. Sleepwalking is not the only type of unusual sleep behavior. Dash include sleepwalking, nightmares, and night terrors. We read again. Sleepwalking is not the only type of unusual sleep behavior. Dash includes sleepwalking. What includes sleepwalking? Others include sleepwalking. Another includes sleepwalking. The other या फिर other. Another includes sleepwalking. Okay. Difference between other and another is what? चलो ग्रामर देखते हैं. What is the difference between another and other? या फिर others, जैसे कि others और another है, क्या डिफरेंस होगा दोनों के बीच में? पहली बात तो ये कि स्लीप वॉकिंग इज नॉट द ओनली, सिर्फ एक नहीं है, बाकी बहुत सारे हैं. डैश इंक्लूड स्लीप टॉकिंग, नाइटमेयर्स एंड नाइट टेरर्स. कितने दिए हैं यहाँ पे? 1, 2 एंड 3. अनदर मतलब एंड अदर मतलब दूसरा भी है, वो भी एक ही ऑप्शन होगा. यहाँ पे एक ऑप्शन है कि 3 ऑप्शन है हमारे पास? 3. तो द अदर, अदर, अनदर के अदर्स. नाउ यू नो, राइट? तीनों ऑप्शन में इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके बाद दूसरे वाला एक ही है, बट अदर्स इंक्लूड मतलब बाकी बहुत सारे हैं. सो अदर्स इंक्लूड स्लीप टॉकिंग, नाइटमेयर्स एंड नाइट टेरर्स. लॉक किया जाए? सब ठीक लग रहा है? शैल वी चेक? इजी पीजी, राइट? नाउ ये हमने इतना डिस्कस करके किया, वी पुट द डिफरेंट ऑप्शंस और हमने बोल के ट्राई किया है, राइट? सो वी टुक हाउ मच टाइम? 5 मिनट्स. कितने टाइम में सॉल्व करना है? मैंने क्या बताया था क्लास में? 2 मिनट्स से कम में. ये तो हम डिस्कस करके कर रहे हैं, तो दैट माइट टेक टाइम, बट एट होम व्हेन यू आर सिटिंग, एवरेज टाइम यू शुड यूज इज व्हाट? लेस देन 2 मिनट्स. हाँ, कभी अगर लंबी हो गई या डिफिकल्ट लग रही है, देन यू कैन टेक 2 मिनट्स 15 सेकंड्स या 2.5 मिनट्स, बट यूजुअली इट शुड नॉट एक्सीड 2 मिनट्स एवरेज. तभी जाके आपका पूरा रीडिंग खत्म होगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू फिनिश इट, राइट? ओके, नेक्स्ट ट्राई करें. नाउ आई विल अगेन नॉट स्पीक द आंसर, यू टेल मी आंसर क्या होगा. ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स. चलो इजी लग रहा है ये भी. रेडी? In terms of your communication skills, it is important to give just as much of your attention to a message you are receiving as to one you are giving. क्या समझ में आया इसमें से? ऐसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, जो भी पढ़ा वो समझ में आना चाहिए. It is important to give as much attention of your attention to a message you are receiving as you are giving. मतलब दोनों में हमें ध्यान रखना है, अटेंशन पे करना है किसको? मैसेज देने में भी और मैसेज लेने में भी, व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग. राइट? नाउ आई एम स्पीकिंग समथिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो रिसीव कर रहे हैं, मैं दे रहा हूं, राइट? ओके. लिसनिंग डैश एज वेल एज बीइंग अ मेथड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन. लेट्स सी द ऑप्शंस. लिसनिंग डैश, देखो यहां दोनों के बीच में क्या है? दोनों कॉमास के बीच में वी हैव अ ब्लैंक, तो यहां पे जो होगा वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, राइट? जब भी कोई भी दो कॉमास के बीच में कुछ आ रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मीनिंग इट इज नॉट इतना एसेंशियल कि आप इसके बगैर भी पढ़ेंगे
तो भी द सेंटेंस विल मेक सेंस। अभी ऐसे देखो कि ये हमने पता नहीं हमने ऑप्शन क्या देखा है, लिसनिंग एज वेल एज बीइंग अ मेथड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, राइट? लेट्स सी, listening dash as well as being a method for gathering information dash your interest. Listening as a result of, sorry, as a result as well as listening, for example, as well as being a method for gathering. Listening, now that, as well as being a method for gathering. Listening, in addition, as well as being a method for gathering information. कौन सा ऐसे सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है चारों में से? Listening as a result, as well as being a method. Listening, for example, as well as being a method. Listening, now that, as well as, and listening in addition, as well as. आगे का तो देखेंगे बाद में, यहां पे भी एक ब्लैंक आ रही, पर इतना हमने पढ़ा दो कॉमास के बीच में क्या लग रहा है? देखो दोनों जगह कॉमा है तो हमें whenever we are speaking we have to take half a second pause. मैंने भी लिया half a second pause so that we will know कि भाई बीच में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है. Listening dash as well as, listening as a result as well as. So दोनों पे जगह पे कॉमा की जगह we took pause half a second का. तो वो जरा ध्यान रख के सुनो, listen carefully and choose your option. Listening as a result as well as. लग रहा है ठीक? नहीं. ओके, कैंसिल. दिस इज यूज्ड, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड. जब भी कंफ्यूजन हो कि चार में से कौन सा बढ़िया ऑप्शन है, विच वन डू यू थिंक, और कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई दो में या तीन में कंफ्यूजन है, एक तो नहीं आएगा, व्हाट यू डू, एक चूज करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है, राइट? फर्स्ट कैंसिल. ओके. लिसनिंग फॉर एग्जाम्पल एज वेल एज बीइंग अ मेथड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन. रखना है कि निकालना है ऑप्शन? लिसनिंग फॉर एग्जाम्पल as well as being a method for gathering information. निकालना है ऑप्शन? ओके, निकाल दिया. Listening, now that, as well as being a method for gathering information. Listening, now that, as well as being a method for gathering information. Listening, in addition, as well as being a method for gathering information. Listening, in addition, as well as being a method for gathering information. आगे का सॉल्व करना है. Dash your interest. Conveying your interest in what the other person is concerned with. To convey, can convey, convey. Little tough, थोड़ा भले wrong हो कोई बात नहीं, but you give me the option and I will choose it. Listening, sorry वो तो बाद में करेंगे. As well as being a method for gathering info. जब भी ये confusion हो ना कि भाई यहाँ पे पता नहीं चल रहा, move on to the next one, right? ये solve करने के बाद शायद sentence ये पूरा set हो जाए तो you'll be able to solve this. As well as being a method for gathering information, conveying your interest in what the other person is concerned with, as well as being a method for gathering information to convey your interest. To convey लग रहा है ठीक? Gathering information, conveying your interest. Gathering information to convey your interest. To convey? Okay. अब आगे का ट्राई करना है पूरा पढ़ के सेंटेंस. Listening dash as well as being a method for gathering information to convey your interest in what the other person is concerned with. So we removed two options. As result निकाल दिया हमने, now that निकाल दिया. Listening for example, as well as being a method for this to convey your interest. Listening, now that, as well as. Listening in addition, as well as. In addition, पक्का कर दो लॉक अभी के लिए. ओके, देखते हैं. Now, asking questions for dash. मैंने अभी नहीं देखा यहाँ पे, but you should read each and every line. यहाँ तक तो पढ़ लिया हमने, चलो पढ़ ही लेते हैं. This in itself can have a positive effect on your relationship with them, and if you are their manager, their motivation. Asking questions for dash of the detail. Asking questions for dash of the detail of the message can also convey that you have understood the message. अभी blank के आगे पीछे का पढ़ना है वापस. Asking questions
for dash of the detail, asking questions for classification of the detail, for identification of the detail, association of the detail, and clarification of the detail. Why do we ask questions? Clarification, easy, right? Asking questions for clarification of the details of the message can also convey that you have understood the message. And यहाँ पे कोई blank आपको समझ में नहीं आ रही है, what would you do? आप पूछेंगे सर इसका मीनिंग क्या है, and why, so that if this is clear to you, you'll be able to choose the correct option, right? Asking questions for clarification, lock किया जाए, okay, clarification, and that you want to respond to it dash, and that you want to respond to it dash. Okay, यहाँ पे ग्रामर कौन सा अप्लाई होगा मुझे बताओ? मीनिंग से हमने एक बार सॉल्व कर लिया, यहाँ पे ग्रामर रूल कौन सा अप्लाई होगा? एंड दैट यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट डैश. ऑप्शन तो बाद में देखेंगे. रिस्पॉन्ड टू इट हाउ. तो जब हमारे पास ऑप्शंस जो होंगे, ये सब जो एल वाई वाले वर्ड है, सब में हमने किया था ग्रामर क्लास में, आई थिंक, राइट. तो ये एल वाई वाले वर्ड्स कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से? ओके, आई मेक इट क्लियर. टू रिस्पॉन्ड, ये जो टू रिस्पॉन्ड है वो कौन सी चीज है? व्हाट इज विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज दिस? रिस्पॉन्ड करना. तो कौन सा? वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब. टू के बाद जो हम डैश लिखते हैं, टू के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट? दिस इज वर्ब. टू रिस्पॉन्ड टू इट. टू के बाद V1. टू रिस्पॉन्ड टू इट डैश. रिस्पॉन्ड टू इट कैसे? हाउ डू वी रिस्पॉन्ड? आई हैव टोल्ड यू कि अगर नाउन के बारे में पता ना हो कि भाई नाउन कैसा है, बॉय, कैसा बॉय? गुड बॉय. तो गुड क्या हुआ? उसकी विशेषता हुई कि बॉय अच्छा है, गुड बॉय. तो नाउन के साथ कौन सा जाएगा? एडजेक्टिव, विशेषता, विशेषण बोलते हैं, पता है हिंदी में, राइट? सो यहां पे व्हाट वी हैव, वर्ब दिया है, इट इज नॉट नाउन. नाउन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, देन दैट इज विशेषण, विच इज एडजेक्टिव. यहां पे हमारे पास वर्ब है. वर्ब में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? वर्ब की मतलब क्रिया की विशेषता. क्रिया की विशेषता क्या होगी? रिस्पॉन्ड टू इट हाउ, कैसे. तो दैट इज कॉल्ड वर्ब में ऐड करना, इज एडवर्ब. तो यहां जो ऑप्शंस हमारे पास आएंगे, ये सब एलवाई वाले वर्ड, दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स. उसमें भी स्पेसिफिकली एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर मतलब कैसे, कोई भी क्रिया कैसे हो रही है. आई एम टीचिंग यू आर लिसनिंग टू मी, कैसे? पेशेंटली, केयरफुली, राइट? यहां पर रिस्पॉन्ड करना है. रिस्पॉन्ड कैसे करना है? दैट you want to respond to it professionally, appropriately, occasionally, proportionately. रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? we know the verb, we are looking for the perfect adverb इनमें से. ओके, एक सेकेंड. And you want to respond to it professionally. एक सेकेंड, आगे का देखते हैं. Asking questions for clarification of the detail of the message can also convey that you may, so you have understood the message and that you want to respond to it professionally, appropriately, occasionally, proportionately, appropriately. ओके, लॉक किया जाए. देखिए आंसर पक्का? दो में ही गड़बड़ थी. सी नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि लिसनिंग, अबे एज वेल एज का मैंने मीनिंग बताओ. मैंने इशारा किया, समझ में नहीं आया कि यहां पे एज वेल एज का मीनिंग क्या हुआ? वी आर एडिंग समथिंग कि लिसनिंग और उसके उपरांत एज वेल एज दिस. एग्जांपल, लिसनिंग एज वेल एज रीडिंग इज अ गुड स्किल टू हैव. मतलब लिसनिंग और रीडिंग दोनों अच्छी स्किल हैं. तो यहां पे लिसनिंग डैश एज वेल एज बीइंग अ मेथड, तो ऑलरेडी इसका मीनिंग क्या हुआ? एंड. हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वापस यहां पे इन एडिशन, राइट? तो लिसनिंग, फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग कॉमा दिया है आपको कि लिसनिंग तो है ही. लिसनिंग इज व्हाट? आपको एग्जाम्पल दिया है. लिसनिंग फॉर एग्जाम्पल एज वेल एज बीइंग अ मेथड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन. तो यहां पे क्या कर रहा है कि लिसनिंग एक एग्जाम्पल दिया है, किस चीज के लिए? इट इज अ मेथड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन. उसके साथ साथ ये चीज क्या है? इट कैन कन्वे योर इंटरेस्ट. तो कॉमा के यहां पे भी कॉमा, यहां पे भी कॉमा, दो कॉमा. चलो यहां पे तो ठीक है, वी हैव अ कॉमा, बट ये भी, दिस इज ऑल्सो बिटवीन कॉमास. समझ में आ रहा है? यहां पे भी कॉमा, यहां पे भी कॉमा, दोनों के बीच में ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई.
तो हम ये भी निकाल दे रहे हैं, ये भी निकाल दे रहे हैं. नाउ इफ वी रीड कि लिसनिंग डैश योर इंटरेस्ट इन व्हाट द अदर पर्सन इज कंसर्न्ड विथ, तो लिसनिंग कैन कन्वे योर इंटरेस्ट. ये समझ में आया? तो लिसनिंग कैन कन्वे योर इंटरेस्ट इन व्हाट द अदर पर्सन इज कंसर्न्ड विथ. दोनों कॉमा के बीच में यह भी कॉमा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये भी कॉमा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. सो नाउ व्हाट डू वी नीड? लिसनिंग कैन कन्वे योर इंटरेस्ट. राइट, गॉट इट? ओके. अभी हम दूसरी वाली ब्लैंक्स करते हैं. राइट, विच इज यू. सो कौन सी 3 चीज तरीके मैंने बताया, मुझे रिमाइंड करवा वापस. फॉर सॉल्विंग ब्लैंक्स, वन इज पैराग्राफ मीनिंग, ओके, ग्रामर, और आपको पूरी लाइन पढ़नी है, उसमें से जो सही लगता है सर, अगर आपको पता ना हो. हाँ. एंड वी हैव कोलोकेशंस. कोलोकेशंस क्या होते हैं वो हम देखेंगे. ओके, यहाँ पे भी हम वी विल सी. ओके, नाउ यू टेल मी कि यहाँ जो है लेट्स से टू रिस्पॉन्ड, अच्छा रिस्पॉन्ड टू. रिस्पॉन्ड टू क्या हो गया? दिस इज रिस्पॉन्ड इज व्हाट? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से अभी मैंने बताया. रिस्पॉन्ड क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब. वर्ब, राइट? ये वर्ब है. ये टू क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से? इट इज कॉल्ड preposition, right? Okay, now this combination is called verb plus preposition, right? मुझे बताओ, respond for ठीक लग रहा है? respond for, respond about, दूसरा और कौन सा हो सकता है ऑप्शन? रॉन्ग वाला ऑप्शन देख रहे हैं अभी तो लेट्स से कि कोई भी और सूट नहीं करेगा, सिर्फ रिस्पॉन्ड टू ही सूट. रिस्पॉन्ड विथ, नो, इट इज ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू. इन रिस्पॉन्स टू योर ईमेल आई विल रिस्पॉन्ड टू यू इमीडिएटली, राइट? तो रिस्पॉन्ड के साथ कौन सा जाएगा? ऑप्शन टू. कोलोकेशंस आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो साथ में जाएंगे. यहां पे रिस्पॉन्ड इज वर्ब, टू इज क्या बताया मैंने? प्रेपोजिशन. वेरी गुड.